morning, students. Welcome back to your EVS class. Students, now tell me, where do we get food from? Any idea? Okay, no problem. I will tell you. We get food from plants. अब आप ये कहोगे, मैम, ये तो प्लांट में वेजिटेबल्स दिखाई दे रहे हैं, फूड कहाँ है? तो डियर चिल्ड्रन, हमारी मम्मी इन्हीं वेजिटेबल्स की हेल्प से टेस्टी फूड आइटम्स बनाती हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हम ब्रीथ लेते हैं, फूड लेते हैं, ग्रो करते हैं, एनिमल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। एंड पता है चिल्ड्रन, प्लांट्स भी हमारी तरह लिविंग थिंग्स होते हैं। वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, फूड लेते हैं एंड ग्रो भी करते हैं। So children, we will learn about types of plants and their parts. जैसे हम सांस लेते हैं, फूड लेते हैं एंड ग्रो करते हैं, इन द सेम वे एनिमल्स भी करते हैं और उसी तरह से प्लांट्स भी करते हैं। आपको पता है, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं। स्टूडेंट्स, हमें अपने आसपास सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? वेरी गुड, वी सी many types of plants and trees around us. And do you know, these are of different colors. Some grow in water, whereas some grow on land. Some plants have colorful leaves. Some plants have colorful flowers. And some bear fruit plants have different functions. Students, अब मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे बॉडी के different parts होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। Today we will know about the parts of a plant. The parts of a plant can be divided into two parts, root system and shoot system. So today we will know about root system. जैसे हमारी बॉडी पार्ट्स में आईज, लिप्स, नोज, हैंड्स, फुट होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। For example, flower, fruit, leaf, stem and root. Today we will learn about the parts of a plant can be divided into two parts, and those are shoot system and root system. The part of the plant under the ground forms the root system. The part of the plant above the ground forms shoot system. That means जो पार्ट सॉइल के ऊपर हमें दिखाई देता है वो शूट सिस्टम होता है एंड जो सॉइल के अंदर हमें नहीं दिखाई देता वो रूट सिस्टम होता है। The root system consists of roots of a plant that grows underground. That means root system में plants के roots होते हैं जो कि underground बढ़ते हैं। It holds the plants in the ground and keeps it upright. That means वो प्लांट्स को टाइटली होल्ड करके रखते हैं ताकि प्लांट्स गिर न जाएं। Students, roots take water and minerals from the soil. Some roots also store food. Students, the shoot system of a plant consists of stem, leaves, flowers and fruits. The stem of a plant grows above the ground. It carries water from the roots to the leaves. That means स्टेम्स का क्या काम होता है? वो रूट से वाटर को बाकी प्लांट्स के पार्ट्स में सप्लाई करता है। Students, as you can see on this, there are 5 main parts of the plant. The first part is root. It absorbs water and minerals. Second part is stem. ये प्लांट को सपोर्ट देता है। Third part is fruit. It protects the seeds. Fourth part is leaf. It helps the plant to prepare food. And the last part is flower. It helps in reproduction. That means flower later on changes into fruit. Students, today in this module we have learned about the parts of a plant, shoot system and root system. Now let's see what we have learned through MCQs. The first question is, a plant is divided into the root system and dash system. Your options are shoot, leaf, fruit or stem. The correct answer is shoot. Next is different parts of a plant do different dash. Now your options to complete this statement are
eating, singing, dancing or functions. Your correct option is functions. Next is plants give us dash things. Your options to complete this statement are 1, 2, 3 or many. The correct option is many. Next question is which of the following is water plant? Options are rose, lotus, mango or neem. The correct answer is lotus. Students, after checking your knowledge, now it's time to practice some questions given from the content. Now let's see and try to understand. Draw and label the parts of a plant. Now let's see what is given there. So students, as you can see on the screen that there is a picture of a plant. So you have to open your notebooks, take out your pencil and draw the image shown on the screen. After drawing the image, आपको इसके सारे पार्ट्स को लेबल करना है as well as इसे कलर करना है. And now it's time to do a fun activity. Let's see what's given there. Trace the leaves of different shapes in your notebook. अब आपको करना क्या है? अपने घर के आसपास different types of leaves को कलेक्ट करना है and अपने नोटबुक में पेस्ट करना है. As well as आपको उनके names भी लिखने हैं कि वो leaves किस plant के हैं. That's it for today, kids. I hope you have understood all the things taught in this module. By this module, I think your all the doubts are clear about what is root system and what is shoot system. So till then, keep growing, keep learning. Thanks for watching. See you in next video. Bye bye.